एंड एक मिनट, मुझे इतना तरक्की कर रही है लेकिन पीछे कोई लोग होंगे जो मिस हो गए आज, तो मुझे वो भी जानना है कि आपके और कितने सपोर्टर्स हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने ये विजुअल्स बनाए, एडिटिंग किया। बहुत से लोग तो यहाँ पर हैं, हमारे सभी भाई बैठे हैं सामने, राजीव जी हैं, बहुत लोग हैं यहाँ क्रेडिट देखते हैं। अभी जो विजुअल में आपने देखा विनय खोसला जी, एंड ऐसा आई टोल्ड यू कि ही इज फ्रॉम जेनेवा। सो जब उनसे वो इतने बड़े मोटे हैं इन चीज़ों के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैगजीन को बिल्कुल टॉप पे ले जाना है कैसे भी। तो आई थिंक अगर कोविड टाइम नहीं होता, जैसे उन्होंने बोला कि कोविड टाइम अदरवाइज वो यहाँ होते हैं हमारे, लेकिन उन्होंने कहा लॉन्च में तो कैसे भी करके चाहे कहीं से भी घूम के आना पड़ेगा। सो श्री महेंद्र उपल जी वो बैठे हुए हैं यूएसए से, बहुत स्टेज इवेंट्स के और प्रोडक्शन के भी बहुत सीनियर हैं, और उनका आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है कि एक मतलब मैं बता नहीं सकता अभी आकर भी। हाँ प्लीज कम महेंद्र उपल जी एंड फोकस करते रहिए। थैंक यू ऑल, गुड इवनिंग। जलेंद्र भार्गव जी इतने अच्छे इंसान हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। अभी तो इन्होंने आप असली में पिक्चर अभी शुरू की है, पिक्चर अभी बंद। ऑल इवेंट्स एंड ऑल प्रोग्राम एवरीथिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, हमेशा ब्लेसिंग से भरी हुई बातें बोलते हैं, और ये अपनी टीम है और यही बढ़कर के अभी और ज़्यादा आगे निकलेगी, और मल्टीपल अभी इससे बहुत बड़े स्टेजेस पर हम लोग आएंगे, ऐसी ही हमारी जी बिल्कुल। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी ये जो मीडिया है उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के बिना हम कुछ भी नहीं है जी। सो आई विल रिक्वेस्ट मीडिया, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। जी सर ये बताइए, ये मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, किस तरह से होगा इसका जरा? हाँ जी, पब्लिकेशन ये सर क्वार्टरली मैगजीन है और साल में 4 बार पब्लिश होगी, और स्टार्टिंग में अभी 72 पेजेस के साथ हम लोग उसको पब्लिश कर रहे हैं। इसकी जो मटेरियल है उसमें आर्टिस्ट कंटेंट तो है इंट्रोडक्शन का, कुछ छोटा मोटा न्यूज कंटेंट जो फिल्म इंडस्ट्री से या पॉलिटिक्स से भी हम ले सकते हैं, और इसमें जो आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं वो उनकी जो की हुई जो है उसको इसमें प्रिंट करते हैं विद एन आर्टिकल। अगर वो अपनी तरफ से भी कुछ लिखना चाहता है देन वी विल प्रिंट दैट आल्सो, इंक्लूडिंग कुछ एड्स होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी तक जो हमने डिसाइड किया है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस में, एड फिल्म एजेंसीज के अंदर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारा एक टाइप बात चल रही है एयरलाइंस में, एक टाइप होगा जिसमें मैक्सिमम लोगों तक भी रीच कर सकें। प्रिंट मीडिया एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई भी मैगजीन निकालना जो है वो सस्ता काम नहीं है, इससे काफी खर्चीला है। और इन योर केस आप उनको मेकअप कराएंगे, फोटोशूट करेंगे, पूरा ग्रूमिंग कराएंगे, और आपका खर्च होता है। तो ये गोइंग टू रिकवर ऑल दिस। एक्चुअली हमारे साथ कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं जिनको एक कॉन्सेप्ट पसंद आया है, एंड दे आर गोइंग टू स्टार्टिंग जो 5-4 एडिशंस हैं वो हम लोग से फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने वैसे 3 साल के लिए हमसे कहा है, 4-5 कॉर्पोरेट्स हैं जिनका हमारे पास ऑफर है, एंड दे विल सपोर्ट अस, एंड वो जितना भी खर्चा है वहाँ से देंगे। उसके बाद हम लोग डिजिटलाइजेशन में भी जा रहे हैं, एंड यू नो डिजिटल में जितना हमारे इसमें भी इसका विजुअल्स भी चलेगा, यानी वीडियो प्रोफाइल्स भी आएंगे, जितना जितना हमारे पास यूट्यूब पर, गूगल पे और चीज़ें पर रनिंग होगी तो हमें अर्निंग्स वहाँ से भी होगा। सो दैट इज द प्लान। सो अभी हम आर्टिस्ट से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ये करते हैं लोग, क्या ये पोर्टफोलियो कराइए, हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे, देन वी पब्लिश। सो वी आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट। तो उसमें एडवर्टीजमेंट से हमको कमाना है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इसका सब्सक्रिप्शन जाएगा कुछ, जैसे
फैशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन दैट विल बी चार्जेबल। उसके अलावा हम कुछ अपार्टमेंट्स रहते हैं जैसे मेन सिटीज को कवर करेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन रहेगा, वहाँ से हमको सोच रहे फीचर करेंगे, उससे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे अगर आपको कुछ काम मिल रहा है ऐसा कुछ? जी हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे क्योंकि किसी को भी अगर कोई पसंद आया तो हम लोग आर्टिस्ट से वो कॉन्टेक्ट हमारी कंपनी को ही करेगा, देन व्हाटएवर जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 60% will go to artist and 40% to artists. मिनीशा कैसा लगा उनको कवर पर देखकर? कवर पर देखकर खुद अपनी तस्वीर देखकर कैसा महसूस किया? Well, I felt because the magazine is for a good cause, a very good platform. I did feel that yes, it was nice. It feels good. Everyone feels good to be on the cover of a magazine, so it always feels good. दूसरा यहाँ पर नई टैलेंट आ रही है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, टिप देना चाहेंगे? I would just what I would like to say is this industry is very difficult. बहुत मुश्किल है यहाँ, कोई फॉर्मूला नहीं है हिट होने का। जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है आज तक ये आपको कोई नहीं बता सकता कि हिट फॉर्मूला क्या है। ये तकदीर की बात है, किस्मत की बात है, फिल्म की किस्मत की बात है, आपकी किस्मत की बात है। लेकिन थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस इज कीप योर सेल्फ बिलीफ, बिकॉज दैट सी जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है देन एवरीथिंग इज हंकी डोरी, लेकिन जब वक्त होता है जब चीजें ठीक नहीं चल रही है, आपका लो फेज हो रहा है, दैट इज व्हेन यू नीड टू कीप योर सेल्फ बिलीफ थ्रू द डार्क डेज, and that's the only thing I can advise. Minissha, Jyoti Venkatesh here. Hi, how are you? It's been so long. Acha, after you made your debut in the film industry, within a very short time the digital era started. So what difference do you find from that era and the digital era today? Do you think more people are getting an opportunity to face the camera? See, the thing is that the digital era actually started much later. By the time the digital era started, if you see magazines, they were moving into the digital space, but people were not accessing it that much. The digital space really blew up when we started getting very high quality smartphones. You know, so that is when on the go people would read the news when you're in the car, when you're traveling, in your lunch break, when you have free time. So as you see, print media was there, but simultaneously they also started maintaining and acquiring a digital platform. But until you did see, and at that time an iPhone was someone only very people who could afford to pay that much would have it. It's only until brands like Oppo and Micromax and all these other brands came in, which priced their phones at a price where everyone can have a smartphone. When Reliance came in and said, you know what, we're going to give free data to everybody. You know, they had data plans that were so cheap. That is when the internet became accessible to everybody. So that's when the boom happened, which I feel was phased, and the boom has happened now in the past 2-3, I feel, years. All this while it was a transition. Thank you, Minissha. And this question is for the editor. You know, what is the print order you are planning? Of the magazine, and also number 2 question which you may not like if we ask, considering you are coming in India, people will not be able to even pronounce the title, so why don't you make it as Stars Today or something? For that we have especially planned for this is written while today, so we'll first of all we have decided to write in Hindi. It is Etolies today. So somebody was asking me how you pronounce it. Is it Etolies today or it was something like that. So then I said, एक छोटा सा बच्चा अगर उसको बोलो कि इतवार बोलो इतवार, and he is a तोतला बच्चा like ना, so he will say कि इतवाल. So just for learning this, then some I think I said
कि मैम तो उनका नहीं ये बहुत अच्छा तरीका है, बट एनीवे वी आर राइटिंग ऑन दिस थिंग इतवार टुडे, बिकॉज वो टंग अलग है वहाँ पर, लोग नहीं बोल पाएंगे, तो इसको इटवाइज टुडे बोलेंगे। सो आप जिसको इटवाइज बोलना है सो बोलेंगे, बिकॉज इंडिया में तो कई प्रोनाउंसिएशन यानी स्टेट वाइज भी बदल जाते हैं सारे। सो अभी हम इतना कर सकते हैं कि हम उसको हिंदी में नीचे लिखेंगे सो दैट कि वो सही प्रोनाउंस हो सके। So at least this will be an excuse now for the whole country to learn one new French word. And the print order, how much you are planning to come out? Yes, sir. Every issue, how many copies you will print? Copy we starting from 50,000 starting, and after that we'll increase. Actually, we're planning for from 1 lakh actually, but starting this first issue will come from 50,000 only. Then after this increase. It's a very brave effort considering that most of the print publications are actually closing down. They are closing down because, sir, this is a very new concept actually. So we want to distribute this in maximum number of people, so that the maximum artists would be approach to these production houses. And initially we have to invest actually. Then after that we will also earn, no doubt. But initially we are not earning from these artists now. So initially we have planned for 2-3 years. Okay, we'll invest, and after 3 years we'll earn, no doubt. So Thank you. Thank you very much. Thank you so much. We are ready for Media Bites now. And thank you so much, our lovely media and our guest. We are ready now. And myself, Nikasha Chauhan, signing out for the day. Thank you so much. So good to see you after so long, Minissha. Thank you. Tell us your experience. What was your first reaction the moment they asked you to be on board for this? So मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत कम होता है जहाँ पे नए लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी, हर कोई अपना, जैसे उन्होंने बोला, पोर्टफोलियो खींचता है, अपने पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद टू गेट एक्सपोजर टू द राइट पीपल, ताकि आपके पिक्चर्स इंडस्ट्री में सब लोग देखें। पीपल डोंट हैव एक्सेस। अगर आप छोटे शहर से आते हो, अगर आप लेट्स से नवी मुंबई से भी आते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू नो कि मैं इन डायरेक्टर से कैसे मिलूँ, इन प्रोड्यूसर के साथ कैसे मिलूँ। आपको फिर कोई एक मैनेजर चाहिए जो आपका काम संभालेगा, लेकिन मैनेजर्स को भी कैसे पता कि वो हर किसी के काम थोड़ी ना संभाल सकते हैं। तो हाउ डू यू गेट द राइट पीपल टू मेक यू मीट द राइट पीपल? एंड दिस मैगज़ीन इज़ वन वे, जो बस हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंट के ऑफिस में पहुंच जाता है। एंड आप कभी ना कभी तो वो मैगज़ीन देखोगे ही, क्योंकि आपके ऑफिस में पड़ेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड अ ग्रेट वे। एंड जैसे मैंने सुना है इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि मैं भी ये वंडर कर रही थी व्हेन आई वाज सीइंग द मैगज़ीन कि हाउ आर दे गोइंग टू मोनेटाइज ऑन इट। बट सर इज़ अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, so they have figured out exactly how to monetize on this. But of course, this is a long-term prospect. This is a prospect where you will see the fruition of it in a couple of years' time. उससे पहले तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है, which is a very brave thing to do in any business. आपके ज़हन में हमेशा मिनिशा जी थी वो कवर के लिए, तो शी इज ऑलरेडी टू कवर सो मेनी टाइम्स। बहुत आपके ज़हन में हमेशा से? हाँ बिल्कुल, हमने बहुत अप्रोच करने की कोशिश की, उनका टाइमिंग और ये सब हमें मैच नहीं कर पा रहा था। तो फिर कल का फंक्शन डिसाइड हुआ, देन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ आया तो हमने कल पोस्टपोन किया। फिर हमने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनका दिल्ली में शो था कहीं, तो उन्होंने फिर वहाँ कैंसिल किया कि नहीं वो दिल्ली का देखेंगे, बट आप कल का मैनेज करो। देन तो जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा कॉपरेशन मिला हमको, एंड शी सपोर्टेड अस। अरे दे दो ना, फ़ायदा क्या हुआ फिर? हाँ जी बोलिए। मैम काफ़ी वक्त से आप इंडस्ट्री में हैं, तो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि जब से आप आई हैं, तो ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताइए किसी जर्नलिस्ट के साथ जब इंटरव्यू किया होगा आपने, ऐसा नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा
मतलब मुझे हुए ही नहीं है आई थिंक। और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं बिकॉज आई फील वेरी लकी जर्नलिस्ट्स हैव बीन काइंड टू मी, they have been more kind to me than otherwise. So I have great respect for our entertainment journalists. I've had a great relationship with them over the years. Minissha, you would be the face of this magazine, or how would you be associated? Like, whenever they need you, in what kind of a... So whenever they need me, of course, I am here for them. Today was a launch event and they had gotten in touch with me and said, this is the concept of it. Does it work for you? Do you like it? And I said, great, I'm on board. I'll come launch your magazine for you and wish you all the best. Sir, I have a question for you. How did you came up with this thought? मतलब इतना creative thought और इतना sufficient thought है, तो कैसे आया ये दिमाग में? एक्चुअली मैंने तो अभी पहले ही बताया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो आई वॉज बेसिकली सिंगर, क्लासिकल सिंगर। तो बहुत से जगहों पर हम जाते थे। हमारे टाइम में तो इतना मतलब 20 साल पहले ऐसा नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो अब आया है। तो बहुत देखा कि टैलेंट होने के बाद भी कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कुछ अप्रोचेज होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, बहुत साल 15 साल पहले का ये कॉन्सेप्ट है, अभी का नहीं है। So by 15 years I am continuously looking that there is no this kind of platform is not available. Even आप गूगल भी करके देखेंगे बट ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पे मैगजीन के लिए या नहीं है, नए आर्टिस्ट के लिए। अभी तो हम इसके लिए कर रहे हैं, आगे आगे फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा रहे हैं। इसके आगे जो एडिशंस आएंगे उसमें फैशन डिज़ाइनिंग है एंड ऑल। सो आइडिया आया बेसिकली हमें खुद के अपने एक्सपीरियंस से कि जब नहीं मिलता कुछ प्लेटफॉर्म तो जो टीस उठती है वो बहुत बढ़िया एज आर्टिस्ट। बट हमारे अंदर शायद कहीं एक कलाकार से ज़्यादा एक मैनेजमेंट का पर्सन है, बिजनेस का पर्सन है। देन आई मोल्ड माई सेल्फ इन टू बिजनेस एंड आई रिसर्च इट एंड नाउ दिस रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सर, इस मैगजीन में कितनी कैटेगरीज होगी? जैसे फाइनेंस हो गया, फिर नहीं, इसमें ऐसा कैटेगरी नहीं, ये प्योरली एक इंट्रो मैगजीन है जिसमें जितने भी न्यू फेसेस हैं जिनको कभी जैसे मिनिशा ने बताया कि इतने सारे लोगों को प्रोड्यूसर को कैसे अप्रोच करें, सेलिब्रिटीज़ के सामने जाना आसान नहीं है, इतनी सिक्योरिटीज़ हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑनलाइन हम सर्च कर लेते हैं बट अंदर उनके ऑफिस तक जाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम लोग एक कंपनी है बेसिकली जो एक तरह से इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एनी बॉडी फ्रॉम कॉमन मैन अगर वो भी हमको अप्रोच करेगा सो हमारी टीम जो है कनेक्ट करेगी उसके टैलेंट के साथ एंड कनेक्ट कर देगी डायरेक्ट प्रोड्यूसर एक्ट्रेस के साथ कि यस आप देखिए अगर इनको कुछ चांस दे सकते हैं। सो ये है प्लेट। सो इट इज़ प्योरली एन इंट्रोडक्शन मैगजीन। इसमें कोई ऐसा आर्टिकल कुछ नहीं होगा। ओनली 3 pages विल बी देयर फॉर दिस न्यूज़ ऑफ दिस फिल्म न्यूज़ एंड सम पॉलिटिकल न्यूज़। ओनली 3 pages आर देयर, अदर ऑल पेजेस आर कनेक्टेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द अपकमिंग आर्टिस्ट। You were there in Big Boss. Now Kangna का show भी है, लॉकअप करके। I don't know about the show. कभी ऐसे एक ऑफर आए तो would you be interested like Big Boss में आप यहाँ कोई रियलिटी शो में या OTT नहीं, 1 second, वो शो होस्ट कर रही है कि वो she is hosting the show. अच्छा, शी इज नॉट अ कंटेस्टेंट ऑफ द She's शो। not a contestant. She's hosting Okay, the show. okay. Just like maybe it's like a Big Boss you would say. This is on what platform or channel? It's on Olit Balaji and और बालाजी पर ही आने वाला है, कंगना रनावत जी होस्ट कर रही हैं। and Balaji हाँ, I heard about this show. MX player, yeah. Okay, but Alt Balaji is doing it, right? Alt is doing it. It's called Okay. Lockup. Okay. One sec. Excuse me, ma'am. Ma'am, can I just see your tattoo? Yeah, sure. Sure. बताइए मैडम। Where did you get this from? It's from my friend. In India only? Yeah. It's a burning rose. Yeah, that I know. Very nicely done. Nice work. Thank you. Yeah. Not for it's a good thing that she was there in Big Boss. she's focusing. हाँ. What a work like अगर ऐसा कोई आपको अगर कोई ऑफर आए लॉकअप में जाने के लिए I think if the offer comes and the deal works out in 2-3 checkpoints that it would probably need to work out in, then why not? What are these checkpoints? Like it is check also. Yeah? Check is must actually. वो तो सबके लिए होता है, आपके लिए भी होता है ना? आपके लिए भी होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, when someone approaches you for a new job, आप पहले ये बोलते हो ना, एक चेकलिस्ट है, लेकिन चेकलिस्ट पे सबसे पहले चेक भी है। Besides that, like what the checkpoint एक checkpoint हो गया, उसके अलावा what? See, I think the very first thing to ask is what is the concept?
If I will enjoy doing it, if I think that I would be able to compete well doing it, then that is the first criteria. And then after that, of course, is monetaries and what it should always be your time. Your time and monetaries for it should be a match. एक आखिरी सवाल कि टैटू आपको बहुत पसंद है जी हम देखेंगे इन फ्यूचर आपको लाइक ऐसा कुछ डिफरेंट मेरे पास है आई हैव 1-2 टैटूज लेकिन वो छोटे छोटे हैं already have a heart on your hand. या छोटू सा notice. There are lots of openings in the OTT act. या What things are other besides magazine? और क्या होगा? So there is a show of mine releasing which Alt Balaji has produced. It's going to release on MX and it is called Cold, Messy, Lonely. So it's a relationship about modern love and it's a relationship how love and today in the modern world can be really messy and complicated and this and that. So this just gives a very real take on that. It's funny. I would call it comedy plus drama. So that's called a dramedy. Yeah, I think that's called a dramedy. So it's a dramedy showing different kinds of love and there are many kind of people with different kinds of relationships. It's not one kind of relationship. It's different relationships and how there are different people who So it's going to be a fun, light show. One last question from my side. हाँ. हमने लता जी को आज श्रद्धांजलि दी। हाँ जी. देहांत हो गया तो how would you pay your tribute to her? Or in case if any memories you have with her, yeah, how do you remember? So unfortunately, I have never met Lata ji, never. And but I have always enjoyed ma'am's music, And आज ही मैं उनके गाने सुन रही थी. आज मैं सुन रही थी, मैं गा रही थी, मैं गुनगुना रही थी, just in remembrance. So that is the biggest tribute you can give is by never forgetting. Because with an artist, you will never forget. Their music is. मैं दिलवाले दुल्हनिया की गाना सुन रही थी. Even today it's so beautiful. लग नहीं रहा था कि इतने साल पहले और मुझे फिर लिरिक्स याद आ गए थे और मैं गा रही थी and then फिर मुझे वो याद आया था कि when I saw the film what I felt. Yeah. So that will never change with an artist. Lata ji and actors, who've gone in the yesteryears will always be with us. Thank you, ma'am. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you all of you. Thank Thank you. you all camera people, all press people. Thank you guys.